मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है, और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है। कुछ ने सीधी बात कही है, सम प्लेड प्रोटेक्टिंग देयर विकेट, पर यह मुद्दा ऐसा है, वी कांट ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस, ऑस्ट्रिच जैसे व्यवहार करती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है। आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट अनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा? आई विल इन्वाइट योर अटेंशन, आई कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन can only provide the organs of the state such as legislature, the executive and the judiciary, वो प्रोवाइड हो गए हैं, हमारे संविधान में है। The great man, father of Indian Constitution, architect of Indian Constitution further says, I quote, the factors on which the working of those organs of the state depends on the people and political parties. Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. अब आज के हालात क्या हैं? one-upmanship, public posting from judicial platforms, ये ठीक नहीं है। These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations, but using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यह मैसेज दो, फ्रेंड्स, आई हैव डिक्लाइंड टू एंटरटेन द अटॉर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट। आई कैन नॉट बी पार्टी टू इमेस्कुलेट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड आई हैव बीन सोल्जर ऑफ जुडिशियरी। I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, a president of the country for 10 years and chairman of the Constituent Assembly, a celebrated figure, what he said. And that is caution
उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. I quote, if the people who are elected and capable and men of character, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. मेरे सामने, आप सबके सामने चिंतन है और चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं. विधायिका में और संसद में जो भी बैठता है, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, let us make it functional. In democratic society, basic of any basic structure, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो आपका विषय है, बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature. And legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion subtle होता है, उतना ही खतरनाक होता है. You are very illustrious people. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई. 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस. This house must deliberate. Can this be done? Can Parliament be allowed that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of Chairman Rajya Sabha, in my maiden address मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता. न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, it has to follow it, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती. यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून तो किसी भी आधार पर कोई भी संस्था मान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए. Hi, you have been watching our videos on HW News English. But why be content with content in just one language when you can choose from both? Yes, from 1st of January, we are bringing together the repository of our ground reports, interviews and analysis under the umbrella of HW News Network. So, while HW News English will stay as it is, you will now be able to watch our Hindi and English reportage together. So don't forget to watch HW News Network from 1st of January.